Evening, everyone. I hope I am audible and my screen is visible. So, if everything is fine, we can start with today's session. So, today is day 74 of the daily drill, and we will be doing a couple of sets from logical reasoning. And these sets are from CAT 2021. So, both of them are interesting sets. One is, of course, an especially difficult set, and one is a manageable, slightly on the easier side set. So, those are the two things that we are going to look at. But the first set is especially difficult. So that is the challenging one. And I remember something that happened during this test. So I took it in this slot. So I had solved this during the test, both the sets that were there. And in 2021, CAT basically shifted to a four set kind of format, wherein there were two sets that had six questions each and two sets that had four questions each. So one of these sets has six questions, one of these sets has four questions. So that was what it looked like back then. And I remember being able to solve the four question set, but this one was a bit difficult in the sense that I had to write down the entire thing and it became. There were sets that had six. Sorry about it. Yeah. So then it would have been slightly difficult for me to go through this set and represent the entire thing on my rough sheet. So that was the problem. So I remember putting just my fingers on the monitor and trying to figure out what all combinations were possible, and somehow it worked. So I messed up one of the easier sets. I think there was one set on ratings. There were five drivers or delivery people who were there, and they were rated on some parameters, and because of that they used to get some incentives and all. So that was one set that I sort of messed up. I did some random calculation errors, like what I had done in the crack live mock solving session that we had done the last week. So if you haven't had a look at that, do check that out. It was a fun experience. Not so fun in terms of the score that I got at the end, but yeah, it was a nice test in general, because it was difficult, right? And you should know how to face difficult tests, difficult sections as well. So I learned a few things because of that attempt. Do go through that video and see what happens if one of the sections does not really turn out as your as per your expectation, right? So that is a nice lesson there. So do have a look at that. And I remember this one. So I just put my fingers on screen. I just blocked a few things here and there, and then I solved this, and I was able to crack it. I marked. I remember having marked three answers in this one, and I got all three right. Right, three or four questions I marked, and I think I got three out of four or something right. And this was done in the last 5 7 minutes. So that's why I really like this set. But the other thing is, of course, you can solve it in a traditional manner as well. So we'll be trying to do that today, and that's basically the point of it. Also, one update for all of you, those of you who missed it last week. The CAT Mastery program is now available for an all-inclusive price of 3,500 rupees. So you will see all three sections being bundled at 3,500. So we have seen a lot of people going for the program in the last few days. So do try out the programs. It will help you solve a lot of quality questions in the days leading up to the CAT. And all these are like nice, difficult, challenging questions with something to learn from. So all the common question types that appear at the CAT, we have taken care of that in this particular program. So do have a look at this program, right? Hello, Virendra. Hi, Samir. Hope all of you are doing well. So let's start with today's session with the first set that we have. I'm sure some of you have seen this set, so let's see how to solve this. Right, I have a clearer table on the next slide. So at this point in time, just understand what this set is, and then we will start solving this one. Right, so there are 10 objects O1, O2, O3, O4 till O10, and these were distributed among Amar, Bharat, Charles, Disha, and Elise. So A, B, C, D, and E. Now each item went to exactly one person. So 10 items are there, and each item went to exactly one person. Each person got exactly two objects. So Amar might have got O1 and O2. Bharat might have got O3 and O4. Charles might have got O5 and O6, and so on. I'm not saying that's what they have, but that's basically what they have got. Right, Samir, at this point in time, no. So the program that we have for the CAT Mastery program does not have test series. We have solved questions in that. But if you're looking for something, do drop us a message and we'll try to figure something out. But the program, the 3500 that I mentioned about, does not include the test series. Okay. So anyway.
So that's what we have here. Each person got exactly two of the items, and this pair of objects is called her or his bundle. So that is the bundle. Bundle consists of two items. That's what we know. Now the following table shows how each person values each object. मतलब उसके हिसाब से value क्या है. So अमर के हिसाब से O1 is valued at 4, O2 is valued at 9, O3 is valued at 9, O4 is valued at 3 and so on. तो उसका value है. भारत के हिसाब से O1 इज वैल्यूड एट 5, O2 इज वैल्यूड एट 9, तो उसके हिसाब से उसको पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए O5 की क्या मतलब वैल्यू है. भरत विल से 5. दैट्स भरत आंसर. चार्ल्स को पूछा जाएगा कि O10 व्हाट डू यू थिंक इज द वैल्यू ऑफ O10. चार्ल्स विल से 6. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स इट्स 6. उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है वो लेना देना नहीं है. बेसिकली इट्स परसीव्ड वैल्यू दैट इज देयर. ठीक है. हाउ ईच पर्सन वैल्यूज ईच ऑब्जेक्ट. Now, the value of any bundle by a person is the sum of that person's values of the objects in that bundle. A person X envies other person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. So all these five people ना they are operating in silos. तो ऐसा नहीं है कि अमर को पता है कि भरत क्या कर रहा है, अमर को पता है कि चार्ल्स क्या कर रहा है. So think about it as if there is a story like this जहाँ पे अमर को एक रूम में let's say बंद कर दिया. एंड अमर वाज आस्क्ड कि भाई देखो ये तुम्हारे सामने 10 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. वी हैव पुट 10 ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू हैव टू प्लेस अ वैल्यू टू ईच ऑब्जेक्ट. तुम्हारे हिसाब से क्या वैल्यू है. तो अमर O1 के सामने 4 लिख देता है, O2 के सामने 9 लिख देता है, O3 के सामने 9 लिख देता है, O4 के सामने 3 लिख देता है एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाट द वैल्यू हैज बीन रिटन. ठीक है. नाउ टू ऑफ these objects will be अमर्स ऑब्जेक्ट्स. तो अमर बोलेगा भाई मतलब O3 एंड O8 मेरे ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से फॉर. ठीक है. Amar will also be told that O1 and O4 would have gone to someone. O2 and O6 would have gone to someone. O3 and O10 would have gone to someone. ये उसको बताया गया है. Now अमर क्या करता है. अमर बेसिकली लुक्स एट द वैल्यूज ऑफ ऑल द बंडल्स. अमर अपने बंडल का वैल्यू देखेगा. अमर भरत के बंडल का वैल्यू देखेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर्स दैट अमर हैज. चार्ल्स के बंडल की वैल्यू देखेगा, दिशा के बंडल की वैल्यू देखेगा एंड एलिस के बंडल की वैल्यू देखेगा. सो अमर विल लुक एट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज पीपल. Now, depending on the values, Amar may or may not envy someone. So, a person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. अब अमर ने अपने बंडल को लेट से 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है. बट भरत के बंडल को अमर के रेटिंग के हिसाब से 13 पॉइंट्स दिए थे. सो अमर विल बी एनवियस ऑफ भरत इन दिस केस. सो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट से अमर ने O3 और O4 और O5 खुद के लिए चूज किया था. लेट से फॉर एग्जांपल. ठीक है. बट अमर हैज बीन टोल्ड दैट भरत हैज O1 एंड O2. सो अमर बोलेगा यार भरत को तो 13 वैल्यू का बंडल मिला और मेरे को तो 10 वैल्यू का बंडल मिला. दैट मीन्स दैट अमर विल बी एनवियस ऑफ भरत. ठीक है. अमर विल एनवी भरत. दैट इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन. सो आई होप ये एनवीज वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ यू लुक एट द कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन, काफी सारे कंडीशंस दिए हुए हैं. अब यहाँ पे अगेन द एग्जांपल हैज बीन गिवन. एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस. For example, hypothetically suppose Amar's bundle consists of O1 and O2. अमर का बंडल लेट से O1 and O2 का O1 and O2 से कंसिस्ट करता है. सो अमर के हिसाब से अमर विल गेट 13 पॉइंट्स वैल्यू ऑफ द बंडल. तो अमर के बंडल का वैल्यू इज 13. और भरत को बोला है भाई O3 और O4 भरत को दिया हुआ है. सो O3 and O4 हैव बीन गिवन टू भरत. सो अमर विल से कि भाई भरत को 12 पॉइंट का बंडल मिला हुआ है. सो अमर विल बी वेरी हैप्पी. सी आई गॉट अ 13 पॉइंट के वैल्यू का बंडल. भरत को तो 12 पॉइंट का वैल्यू मिला. भरत को क्या नहीं करना. राइट. आई एम बेटर देन भरत. सो दैट इज बेसिकली दी वे इन विच भरत विल थिंक. ऑन द अदर हैंड भरत वैल्यूज इज ओन. मतलब भरत के केस में अगर देखा जाए, भरत बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से आई वुड हैव गॉट 7 + 5 मतलब 12 पॉइंट्स का मेरा बंडल होता. सो भरत परसीव्स हिज बंडल टू बी ऑफ 12 वैल्यू. एंड उसको बोला जाए कि भाई अमर के पास O1 एंड O2 है, तो बोलेगा यार अमर को तो 14 पॉइंट का बंडल मिल गया. अमर इज डूइंग मच बेटर देन आई एम डूइंग. आई एम एनवियस ऑफ अमर. So Bharat will be envious of Amar because Bharat के हिसाब से 12 is the value of his bundle. But according to his ranking, Amar has got 14 points का bundle. तो थोड़ा सा उसको हर्ट होगा ना, मतलब कि भाई ये क्या कर. राइट. सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस. यही है पॉइंट और कुछ भी नहीं है. You have to just understand that nobody is interacting with anyone else. So for all practical purposes ना सिर्फ एलिस का डेटा दे दो तो भी चल जाता. मतलब आई एम नॉट सेइंग चल जाता इन टर्म्स ऑफ द सेट, बट एलिस इज डूइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग कंपेयर टू दिशा. दिशा की रेटिंग का और एलिस की रेटिंग का कोई लेना देना नहीं है. सो ऑल दीज रोज हैव गॉट नथिंग टू डू विद ईच अदर एक्सेप्ट दैट दैट शुड नॉट बी ओवरलैप. मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट शुड नॉट बी ओवरलैप. दैट इज द ओनली पॉइंट. फाइन. नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है. If someone's value for an object is 10, then he or she received that object. भाई 10 का वैल्यू तो तुमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा.
O1, O2 and O3 were given to different people. O1 and O8 were given to different people and so on and so forth. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है. Let's put everything in this format so that we have some clarity in terms of करना क्या है. ठीक है. So I hope ये envious वाला part समझ में आ गया. Now let's start with this one. If someone's value for an object is 10, then he or she received the object. तो देखते हैं 10 किसको वैल्यू दिया था. अमर ने किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को 10 वैल्यू नहीं दिया था, तो अमर को बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिला. मतलब बिकॉज अमर हैड गिवन वैल्यू 10, वो तो नहीं हुआ. व्हाट अबाउट भरत. भरत ने O9 को 10 दिया था, तो भरत वुड हैव डेफिनेटली गॉट O9. ठीक है. सो भरत को O9 फॉर श्योर मिला हुआ है. आई जस्ट राइट O9 हियर इन फ्रंट ऑफ भरत. लेट्स सी व्हाट ऑल भरत हैज. फाइन. बाकी तो वहीं पे 10 दिया था, तो भरत वुड हैव गॉट 10 एंड समथिंग एल्स. चार्ल्स ने किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्ट को 10 वैल्यू नहीं दिया था, सो चार्ल्स को कुछ भी नहीं मिला होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स. दिशा अगेन डिड नॉट गिव एनी ऑब्जेक्ट अ वैल्यू ऑफ 10, सो दिशा वुड आल्सो हैव नॉट गॉट एनीथिंग. एलिस ने ये वाले को 10 दिया, तो एलिस वुड हैव गॉट दिस ऑब्जेक्ट फॉर श्योर. तो एलिस के सामने अपन O10 लिख देते, तो एलिस को O10 मिल चुका है. राइट. सो भरत हैज बीन गिवन O9, एलिस हैज बीन गिवन O10. दैट मच वी हैव फिगर्ड. तो ये वाला पार्ट पूरा डन है. किसी ने तो और 10 तो दिया नहीं है, तो वी कांट फिगर आउट एनीथिंग एल्स. Whoever has given the value of 10 to any object has got that object. Objects O1, O2 and O3 were given to three different people. अब मेरे को नहीं पता किसको क्या दिया है. भरत को O1 दिया हो सकता है, एलिस को O2 दिया हो सकता है. We don't know what has happened. So forget about this. Objects O1 and O8 were given to different people. मतलब O1 and O8 किसी को भी नहीं मिला है. Again we can't do anything. O8 और O1 कुछ भी नहीं मिला अपने को. So let's not get into this one. This one. Three people value their own bundles at 16. No one values his or her own bundle at a number higher than 16. तो इसका दो इंटरप्रिटेशन, मतलब दो चीजें जो इंटरप्रेट करनी है. वन, थ्री पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट 16. मतलब क्या हो गया. अमर लेट से अपने बंडल को 16 वैल्यू करता है, मीनिंग दैट 9 प्लस 7 इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. तो ये हो सकता है. बट द अदर थिंग इज, जिसने भी अपने बंडल को 16 किया है ना, वो कोई और के बंडल को 16 या उसके ऊपर का वैल्यू 16 से ऊपर का वैल्यू नहीं डिजाइन वैल्यू करता है. ठीक है. 16 से ज्यादा वैल्यू नहीं करता है. सो इफ समवन सेज दैट आई हैव वैल्यूड माय बंडल एट 16, लेट्स से, दे विल नॉट बी एनवियस ऑफ एनीवन एल्स. दैट इज द पॉइंट. आई विल बी एनवियस ऑफ समवन हु हैज अ हायर वैल्यूड बंडल देन आई हैव ना. But if I have valued my bundle at 16, I will not be envious of anyone else. Because according to me, according to my value rating, nobody else would have a bundle जो 16 points के worth है. ठीक है. Now we don't know who has got 16. So अभी के लिए तो नहीं पता, but 3 out of 5 तो किसी को envy नहीं करेंगे. That is the point of it. So envy वाला part सिर्फ दो ही लोगों में आएगा. Let's see. Then what happens? दिशा values her own bundle at an odd number. दिशा अगर ऑड नंबर कर रही है अपने बंडल को वैल्यू, विच मींस दैट दिशा इज नॉट द पर्सन हु हैज वैल्यूड हर बंडल एट 16 ना. 16 ऑड नंबर नहीं है. सो दिशा शुड नॉट हैव वैल्यूड हर बंडल एट 16. तो वी नो दैट ए बी सी एंड ई में से देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली थ्री पीपल जिन्होंने अपने बंडल को 16 का वैल्यू दिया हुआ है. सो वी नो दैट दिशा इज डेफिनेटली नॉट द हाईएस्ट इन अ. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल अदर्स वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट एन इवन नंबर. तो अब यहाँ पे इवन नंबर है बंडल्स के बाकी लोगों की. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. अभी अगर बाकी लोग अपने बंडल को इवन नंबर दे रहे हैं, भरत के केस में इवन होना चाहिए नंबर. दैट मच वी नो फॉर श्योर. इफ भरत हैज गिवन द वैल्यू और इवन नंबर का वैल्यू, देन व्हाट विल हैपन. यहाँ पे वी आर सेइंग दैट भरत ने 10 यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. इफ भरत हैज वैल्यूड ऑब्जेक्ट 9 एट 10, भरत कैन नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6. ये तो हो ही नहीं सकता भरत के पास. व्हाई? बिकॉज देन भरत विल हैव एन ऑड नंबर ना, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट भरत हैज रिसीव्ड. तो ये 6 तो भरत के पास हो ही नहीं सकते. भरत वुड हैव ईदर ऑप्टेड फॉर ऑब्जेक्ट 7, ऑब्जेक्ट 8 और ऑब्जेक्ट 10. तीनों में से कोई तो एक है, बिकॉज O9 हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू भरत, बिकॉज भरत गिव इट 10 पॉइंट्स. ठीक है. तो ये अपने को पॉइंट पता है. We also know that three people value their own bundles at 16. No one values his or her own bundle at a number higher than 16. तो कोई भी 16 से ज्यादा अपने बंडल को कोई हायर रेटिंग नहीं देगा. That is basically the point, right? So that's what we are being what we are that's what we have here. So अभी भरत जो है ना, वो O8 और O10 नहीं ले सकता ना. नहीं तो what will happen? भरत would have then valued his bundle at 18, but 16 के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा उसके बंडल को. So भरत has to go for O7. दैट इज द फर्स्ट. ठीक है. सो भरत का अपना क्रैक हो गया है. भरत विल डेफिनेटली गो फॉर O7. नो दिवाकर, थ्री पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट 16 मींस दैट थ्री पीपल डू इट, फोर पीपल डू नॉट.
इफ यू से दैट एटलीस्ट 3 पीपल या एग्जैक्टली 3 पीपल नहीं होगा, देन द पॉइंट नॉट बी 3 पीपल ना। 3 पीपल वैल्यू द बंडल सेट 16 का मतलब है 4 पीपल वैल्यू द बंडल सेट 16 नहीं होगा, 5 पीपल वैल्यू द बंडल सेट 16 नहीं होगा, 2 पीपल वैल्यू द बंडल सेट 16 नहीं होगा, एंड सो ऑन। So this basically means exactly 3 people. If they wanted to say at least 3 people or at most 3 people, वो दे दो, right? So this basically means exactly 3 people. ठीक है? So Bharat would have valued his bundle at or Bharat would have created his bundle using O7 and O9 because 16 यहाँ से ही बनेगा. So Bharat is one of the people who has got 16. Similarly, अगर एलिस की बात करते हैं, एलिस also should have an even number as the value of her bundle. अभी यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस 6 16, 18 नॉट पॉसिबल, 19 नॉट पॉसिबल, ऑड नंबर भी है, बड़ा नंबर भी है, नॉट पॉसिबल, ओ 4 5 15 नॉट पॉसिबल, ऑड नहीं है, इवन होना चाहिए, 6 16 पॉसिबल, 15 नॉट पॉसिबल, 16 अगेन पॉसिबल, 13 नॉट पॉसिबल, 17 नॉट पॉसिबल। सो एलिस के पास ही एक ही पॉसिबिलिटी कि 16 होगा। सो एलिस को पक्का 16 वो करना चाहिए ना। आर्यंश, विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? Just let me know, okay? Because there is some lag na between I saying something and you commenting. थोड़ा सा बीच में there is a time gap. So let me know which part have you not understood. So I'll cover that part again. ठीक है? So Elise would have got only 16. That much I think should be understandable, right? Because Elise के पास even number होना चाहिए rating का. And second thing is Elise cannot get more than 16. तो 4 to कहीं पे भी नहीं है. तो Elise has to get a 6 in addition to her 10. ठीक है, भरत वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, सो भरत वाले पार्ट के अंदर वी नो दैट 3 पीपल हैव वैल्यूड देयर बंडल्स एट 16। अब व्हेन आई से वैल्यूड देयर बंडल्स, इसका मतलब क्या हो गया? भरत विल से दैट आई हैव चोजन ऑब्जेक्ट 7 एंड आई हैव चोजन ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 5। लेट्स से कोई भी दो ऑब्जेक्ट उसने चूज किए हुए हैं, फिर उसको दिखाता है कि बॉस ये देखो उसका वैल्यू, मतलब वैल्यू होने के बाद उसको बोला था कि भाई ये दोनों तुमको मिल रहे हैं करके। देन भरत विल बेसिकली कैलकुलेट कि भाई कितना इसका वैल्यू है मेरे हिसाब से, एंड इफ आई एम गेटिंग अ गुड डील और नॉट। दैट इज बेसिकली भरत का। वी नो फॉर श्योर दैट भरत ने इसको 10 दिया था, सो भरत वुड हैव डेफिनेटली गॉट ऑब्जेक्ट 9। ये तो अपने को पता है। ऑब्जेक्ट 9 के साथ में भरत वुड हैव गॉट समथिंग। वी ऑल्सो नो दैट दिशा वैल्यूज हर बंडल एट एन ऑड नंबर, बाकी एवरीवन वैल्यूज देयर बंडल्स एट एन इवन नंबर। तो ये ऑड है, बाकी सारे इवन होने चाहिए ना। भरत शुड बी इवन, अमर शुड बी इवन, चार्ल्स शुड बी इवन, एंड एलिस शुड ऑल्सो बी इवन। ऑल ऑफ देम शुड बी इवन। तो भरत को अगर इवन बनाना है और 10 के साथ क्लब करना है और 16 के ऊपर भी नहीं जाना है, तो व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर? भरत कैनॉट गो फॉर O1, O2, O3, O4, O5, O6 बिकॉज 10 प्लस 5 15 ऑड नंबर हो जाएगा ना। सो नीदर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट फॉर भरत, बिकॉज ये करने से ऑड नंबर बनेगा, बट अपने को भरत को इवन देना है। सो भरत हैज ओनली चॉइसेस बिटवीन O7, O8 एंड O10। तीनों में से एक लेना ही पड़ेगा बिकॉज O9 उसको मिल चुका है। So either Bharat gets 10 plus 6 16 or 18 or 18. But no one values her or his own bundle at a number higher than 16. मतलब मैक्सिमम भरत अपने बंडल को 16 पॉइंट्स देगा, 18 पॉइंट्स तो दे नहीं सकता। तो अगर भरत O8 एंड O9 लेता है, देन भरत का वैल्यू विल बिकम 18, बट नो वन वैल्यूज इट मोर देन 16। तो 18 कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाई भरत विल गो फॉर O7 एंड O9। ठीक है, सो भरत को O7 और O9 मिल रहा है, दैट मच वी नो फॉर श्योर। ठीक है, हायर इन दम। तो ये हो गया है फाइन। सो भरत विल नॉट गेट एनी ऑफ दिस, तो वो छोड़। नाउ वी नो दैट एलिस को भी 16 मिलना चाहिए। सेम लॉजिक, एलिस हैज टू गेट एन इवन नंबर। एंड इवन नंबर कैसे पॉसिबल होगा? यू क्लब 10 विद अ 6, 10 विद एन 8, 10 विद अ 6 और 10 विद अनदर 6, तो ही 16 होगा मैक्सिमम। अब 8 के साथ तो क्लब कर नहीं सकते एलिस को। सो एलिस विल हैव टू गो फॉर इधर O1, O5 और O7। बट O7 कैनॉट बी अलॉटेड टू एलिस बिकॉज O7 तो ऑलरेडी भरत को दे चुके हैं, राइट? सो O7 भरत को ऑलरेडी दे चुके हैं, दैट इज व्हाई बेसिकली वी कैन नॉट गिव O7 टू एलिस। सो एलिस विल गेट ईदर O1 और एलिस विल गेट O5, बट इन ईदर केस एलिस वुड हैव गॉट 16 ना। एलिस को 14 12 10 सब मिल ही नहीं सकता, एलिस विल हैव टू गेट 16। ठीक है, तो अपने को तीन में से दो 16 मिल चुके हैं। वी हैव गॉट भरत का 16, वी हैव गॉट एलिस का 16। तो ये दो 16 अपने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। We also know that Elise would have got either O1 or O5. That much we know for sure. ठीक है, सो ये वाला पार्ट मोर और लेस अपना कवर हो गया। फाइन, सो दैट्स व्हाट वी नो। नाउ
We have to understand this. Some people who value their own bundles less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16. So some people, not everyone, some people who value their own bundles less than 16. ठीक है, तो कोई तो है, लेट्स से अमर ने अपने बंडल में O1 और O2 लिया था. सो अमर ने पहले बोला कि भाई 499373 ये मेरा रेटिंग है करके. फिर अमर को बोला था बॉस तू O1 और O2 ले ले करके बोल देते. नाउ अमर विल से कि भाई मेरे बंडल का वैल्यू तो 13 है. सो अमर हैज वैल्यूड हिज बंडल लेस देन 16 इन अ वे. तो वो लोग एनवी करेंगे सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16. सो अमर कैन बी जेलस ऑफ एनवियस ऑफ भरत बिकॉज भरत ने अपने बंडल को 16 क्रेडिट किया है, एलिस ने अपने बंडल को 16 क्रेडिट किया है. सो देयर इज अ चांस दैट अमर कुड बी एनवियस ऑफ भरत और एलिस, कुड बी सम पीपल, राइट, envy some other people who value their own bundle at 16. And the most important part of this set is this harmless looking छोटा सा statement लास्ट में दे दिया, no one else envies others. अब no one else envies others का मतलब क्या बना? भरत को अगर 16 मिला है तो भरत does not value his bundle at less than 16, तो वो किसी को envy नहीं कर सकता. So Bharat cannot be envious of Elise at all. That is basically the point of this. ठीक है, भरत cannot be envious of Elise at all. Elise cannot be envious of Bharat at all. So जिसको भी 16 मिला है ना वो किसी को envy नहीं करेगा. That is the point of this. So no one envies others का मतलब है people who have valued their bundle at 16 will not envy anyone else. ठीक है, और envy anyone else क्यों? Not because they're kind hearted and all. No. Because mathematically nobody else is going beyond 16 according to उनका value. That is the point. तो लास्ट में देखेंगे तो पता चलेगा what this point means, but this is a beautiful point that we have here. ठीक है, तो अभी तक more or less we are thinking about stuff in general कि क्या चल रहा है. फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस हियर. तो इसको 16 मिल गया, इसको 16 मिल गया, ये दोनों इवन है. इन दोनों में से किसी को तो एक 16 होना चाहिए, राइट, बिकॉज थ्री पीपल, एग्जैक्टली थ्री पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट 16. सो अमर अपने बंडल को 16 वैल्यू कर सकता है क्या, या चार्ल्स अपने बंडल को 16 वैल्यू कर सकता है क्या? दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द क्वेश्चन एंड दैट विल बेसिकली हेल्प अस गो स्लाइटली अहेड इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग दिस सेट. ठीक है, सो टेक सम टाइम, think about this. Can Amar reach 16 or can Charles reach 16? दोनों में से कौन 16 पे जा सकता है, सोचना थोड़ा सा. If you want, you can pause the video and think about it as well. And it's a very nice bottleneck that you have here. तो a lot of people I'm sure would have got stuck here कि अभी करना क्या है. यहां तक तो समझ में आ गया, आगे क्या करना है. That would have been a problem for a lot of people. ठीक है, so I'll tell you what needs to be done here. The important thing is what you have written here. Whoever values their bundle at 16 will not envy anyone else. अब ये वाला पार्ट जो है ना, वो लोगों को नहीं पता ना कि भाई 16 वाले अपने आप को वो करेंगे, बाकी लोग एनवियस नहीं होंगे. ये सब तो दे डोंट नो. इट हैज हैपेंड बिकॉज दे हैव चोजन समथिंग. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमर हैड वैल्यूड हिज बंडल एट 16. अमर ने अपने बंडल को ना 16 करके वैल्यू दिया था, लेट्स से, व्हिच मींस अमर शुड नॉट बी एनवियस ऑफ एनीवन एल्स. बट अकॉर्डिंग टू अमर, भरत के बंडल का वैल्यू कितना है? दैट इज द क्वेश्चन, राइट. अकॉर्डिंग टू अमर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भरत बंडल? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू अमर, O7 इज 8 पॉइंट्स, O9 इज 9 पॉइंट्स, तो भरत को तो 17 पॉइंट्स मिलना चाहिए. सो इफ अमर हैज वैल्यूड हिज बंडल एट 16, ही विल बी एनवियस ऑफ भरत ना, राइट. अगर अमर ने अपने बंडल को 16 का वैल्यू भी दे दिया, जो वो एक हाईएस्ट नंबर है जो अपने बंडल को दे सकता है, ही विल स्टिल बी एनवियस ऑफ भरत. बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जिसको भी 16 मिला है वो किसी को एनवी नहीं करेगा. ओनली पीपल हु वैल्यू देयर बंडल्स लेस देन 16 मे एनवी सम अदर पीपल. ये दिया हुआ है. और सम एनवी हु वैल्यू देयर बंडल्स लेस देन 16 एनवी सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर बंडल एट 16. ठीक है, सो अमर के पास 16 हो ही नहीं सकता, बिकॉज इफ अमर हैड 16, अमर वुड नॉट हैव बीन एनवियस ऑफ एनीवन एल्स. बट अमर इज क्लियरली गोइंग टू बी एनवियस ऑफ भरत, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अमर, भरत हैज गॉट 17. तो क्या पता चलता है अपने को यहां से? अमर इज नॉट द वन विद 16, व्हिच मींस दैट चार्ल्स विल बी द वन विद 16. ठीक है, तो चार्ल्स के बंडल का वैल्यू 16 है. अगर चार्ल्स के बंडल का वैल्यू 16 है तो वो 16 बन कैसे सकता है? दैट इज द क्वेश्चन नाउ. सो नाउ थिंक अबाउट इट. चार्ल्स कुड नॉट हैव चोजन O7, Charles could not have chosen O9, Charles could not have chosen O10.
So Charles could have only chosen O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O8 में से कोई तो एक नंबर चूज किया होगा चार्ल्स ने. ठीक है. सो चार्ल्स का बंडल इज वैल्यूड एट 16 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हिमसेल्फ. तो कैसे हो सकता है? नाउ इफ यू लुक एट इट, वी हैव द लार्जेस्ट नंबर एज 8 हियर. 8 से बड़ा नंबर ही नहीं है. तो दो नंबर अगर ऐड करके 16 बनाना है, आई हैव टू हैव टू 8s. We also know that O1, O2 and O3 were given to three different people. So चार्ल्स को O1, O2 या O3 में से दो नंबर तो मिल ही नहीं सकते. Which means Charles should have chosen O8. We also know that O1 and O8 were given to different people. तो चार्ल्स को O1 भी नहीं मिल सकता. So Charles has got either O2 और O3 में से एक कुछ तो चार्ल्स को मिला है. That much we know for sure. Correct. Divakar not even O1 because O1 and O8 are given to different people. So Charles can't even get it. So Charles would have got O2 or O3 में से something and O8 for sure. So I'll just write O8 in front of Charles here just to make our life easy and consistent. And Elise के सामने O1 या O5 में से something will come. We don't know. ठीक है? Now this is basically what we have. Now what can we do? What could be the next step? Think about it. So out of 10 objects, 4 object का allocation हो चुका है. Right? Charles के केस में we are torn between O2 और O3 and Elise के केस में we are torn between O1 and O5. That is basically what we are torn between. So let's see what happens after this. Think about it. Give 30 seconds. थोड़ा सा सोच लेना इसके बारे में. It's a critical step. Once this happens, we should be fine. So if anyone wants to contribute in the chat, you can do that. Otherwise, you can just make a mental note of it and then we can continue. Fine. Let's see. चलो. Now the other thing. Now if you look at दिशा, अब दिशा के पास तो odd number होना चाहिए. And Disha could not have gone for O7, O8, O9 और O10 because इसका allocation तो already हो चुका है. O7, O9 go to Bharat, O8 goes to Charles, O10 goes to Elise. That we have done. Okay, ठीक है. So Divakar has gone to Amar. एक बार दिशा देख लेते हैं, then we can go to Amar. No problem. So these four are not possible. Now if Disha has to get an odd number, Disha has to have one even number plus one odd number. वही होना चाहिए. Right? It has to be one even number plus one odd number. That is the only possibility. Now we can see here that all the even numbers are 8, na? So one of these 8s has to go to Disha. So O1, O2, O3 में से कुछ तो एक दिशा के पास जाना चाहिए. That much is known for sure. And 5, 5, 3 में से one thing should go to Disha. So one out of these three will go to Disha and one out of these three will go to Disha. That much we know for sure. Okay, so that's what we know. Disha of course cannot get 16 because one to it's an she's getting an odd valued thing and 16 is given to only three people और तीनों लोगों को अपन ने identify कर लिया. Fine. Now what can we say about Amar? So what Divakar is saying is now Amar has to be 14 or 12. So अगर यहाँ पे देखेंगे तो 16 भी नहीं है और even भी है. Right? So Amar can be either 14 or 12 or 10 or 8 and so on. मतलब आगे जो भी. ठीक है. But if you look at what is happening here, Amar cannot be given O7, O8, O9 और O10. ये चारों Amar को दे नहीं सकते. The highest total that Amar can get is 9 plus 9, 18, which is not possible. The next highest total is 9 plus 7, 16, which is again not possible. So उसके आगे क्या मिल सकता है Amar को? Amar can either get a 14 or a 12. ठीक है. Now Amar को 14 कैसे दे सकते हैं? That is the question. If O7, O8, O9, O10 are not available, how can Amar be given a 14? 4 plus 10, not possible. 9 plus 5, not possible. 9 plus 5, not possible. 3 plus 11, not possible. 7 plus 7, not possible. 3 plus 11, not possible. तो अमर को अपन 14 भी नहीं दे सकते. ठीक है. So अमर cannot be given 14, which means अमर can be given at most 12. अमर को 12 कैसे देंगे? 4 plus 8, 12, but 8 तो अमर को नहीं दे सकते. 9 plus 3, 12, possible. Right? O2 plus O3 is possible. O3 plus O6 is also possible. O3 plus O4 might be possible. O2 plus O6 might be possible. We'll see later. ठीक है. So अमर को 12 दे सकते हैं.
फाइन। अमर को 10 भी दे सकते हैं, O4 और O5 अगर अमर को दे दिया तो अमर का 10 बन जाएगा, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। O5 प्लस O6 अमर को दे दिया तो अमर का 10 बन जाएगा, इवन दैट इज पॉसिबल। फाइन। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली कैन वी डू? 14 इज नॉट पॉसिबल, तो अमर का 12 तो बन गया। सो अमर इज इधर 12 और 10 ऑल्सो पकड़ लो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग, बट अमर इज एटलीस्ट 12 इज व्हाट वी डू। ठीक है, सो 14 इज नॉट पॉसिबल फॉर अमर। नाउ व्हाट विल वी डू? Think about this. So this is of course a tough set, not an easy set at all. This is definitely a tough set that we have here. So, but that's basically how it goes. तो यहाँ पे बेसिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड दैट यार ये पूरा का पूरा रेप्लिकेट करना भी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैड वेरी लेस टाइम लेफ्ट। यहाँ तक आई हैड स्टिल रीच ड्यूरिंग द टेस्ट, बट देन आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो नाउ आई जस्ट टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस एंड टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी मैनेज्ड, कैन नॉट बी मैनेज्ड, इफ दे कैन बी मैनेज्ड। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, देन वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट O8? अब O8 का अपने को मिल गया है क्या वैल्यू? O8 was given to Charles, that much we have figured out till now, right? So that's what basically I did. We know that O8 was given to Charles. यहाँ पे अपन ने मार्क कर दिया है O8 के सामने Charles. So we know for sure that option D is going to be the correct answer to this one. So although I am not able to figure out my next step, let's say at this point in time, I'll still know that एक क्वेश्चन का आंसर तो पक्का O8 was given to Charles है। Who among the following envies someone else? अब यहां पे अगर देखा जाए, so B, C and E, Bharat, Charles and Elise will not envy anyone else, right? Will not envy anyone else. Why? Because they're already at 16. Whoever is at 16 will not envy anyone else. So my answer should be either Amar or Disha ना। अमर और दिशा में से कोई तो एनवी करेगा, दिशा ऑप्शन में ही नहीं है, सो माय आंसर इज ऑप्शन ए। तो सेकंड क्वेश्चन में अपन ने आंसर कर लिया। Till now we have answered 2 questions out of 6 without even completing the entire set. That was the beauty of this set. फिर what is Amar's value for his own bundle? अब यहाँ पे एक तुक्का मार सकते हैं 14 या 12। ठीक है, अब आगे जाके पता चलेगा 14 है कि 12 है, बट इफ यू आर गेसिंग समथिंग, आंसर इधर 14 और 12। ठीक है, दैट वाज वन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट O4 was given। अब O4 was given to यहाँ पे अपने को नहीं पता। The only thing that we know is O4 के सामने if you look at it, O4 अभी के लिए तो दिशा के सामने ही मेरे को दिख रहा है। एलिस को O4 नहीं मिल सकता, भरत को O4 नहीं मिल सकता, चार्ल्स को O4 नहीं मिल सकता। So O4 should go to either A or D. So again, if I'm taking a bet, what will I do here? I will quietly mark Disha as my answer and move ahead in life. Although मेरे को आंसर नहीं मिला है, I have not got the answer yet, right? I don't know if Disha is my answer. But I know that अमर और दिशा में से मेरा आंसर होना चाहिए, that much I know for sure, right? I know that अमर या दिशा में से मेरा आंसर होना चाहिए, और अमर तो ऑप्शन में ही नहीं है, so I'll definitely get दिशा। यहां से यू कैन थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करके O4 दिशा के सामने डाल दो। ठीक है, नाउ योर लाइफ बिकम्स मच इजियर। ऑब्जेक्ट O5 was given to, अगर O4 के सामने दिशा लिख देते हो, देन यू विल सी व्हाट हैपेंस आगे जाके। ठीक है, तो O5 was given to, एलिस के पास हो सकता है O5, चार्ल्स के पास नहीं हो सकता, भरत के पास नहीं हो सकता। सो O5 कैन बी विथ एलिस, दिशा और अमर। ठीक है, अगेन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिशाज बंडल नाउ, अभी सोच लो थोड़ा सा। दिशा को O4 में अगर 5 मिला है, यस दिवाकर, दिशा को अगर O4 में 5 पॉइंट्स का वैल्यू है, कैन दिशा चूज O5 एज वेल? नॉट पॉसिबल ना। इफ दिशा चूजेस O5, देन दिशा वुड हैव वैल्यूड हर बंडल एज एन इवन नंबर, तो दिशा में मेरा आंसर नहीं है। तो माय आंसर इज इधर अमर और एलिस, ए और ई में से मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ए और ई दोनों दिए हो, so then you might have to take a guess, you might say that Elise is my answer because Elise के सामने already अपन ने underline किया हुआ है, right? So that is what you might go for and it is the right answer. Elise is the answer to this one. आगे जाके पता चलेगा, but that is the answer. What best can be said about the distribution of object O1? अब O1 किसके पास जाएगा? Again you can think about it. O1 can go to either Elise or it can go to Disha or it can go to Aman.
ठीक है, तो यही बचा अपने पास। सो एक दो तीन गेस मार लो, दो तीन सॉल्व कर लो, यू शुड बी डन। दैट इज बेसिकली हाउ आई सॉल्व दिस सेट. So when I told you at the beginning of the set that I just put my fingers here and there and covered a few things and then tried to see what how I can visualize it, this was basically what I had done during the test. ठीक है, so somehow वो brain wave आ गया and I could do this during the test. May or may not happen every time, but ये हुआ and that's how I got 3 or 4 answers right इसके अंदर without even solving the entire set. Fine. Now let's come back to the solution and see what happens. अभी लेट्स से अपने को ये एलिस ओ सॉरी जो भी है दिशा ओफर वाला नहीं पता अपने को, लेट्स से वी डोंट नो दिस. ठीक है, नाउ हाउ विल वी हैंडल, नाउ थिंग्स बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर एलिस एंड सी व्हाट हैपेंस. अगर एलिस को अपन 6 देते हैं तो क्या, O1 देते हैं तो क्या होगा, एलिस को अपन O5 देते हैं तो क्या होगा. तो लेट्स ट्राई दिस. सो आई यूज अनदर पेन हियर एंड विल ट्राई टू सी द आंसर टू दिस. ठीक है, सो इन दिस केस लेट्स से एलिस हैड गॉट अ 6 हियर. ठीक है, तो O1 6 जो है वो एलिस को एलिस ने चूज किया था. लेट्स नाउ एलिस हैड गॉट 16. नाउ बिकॉज एलिस हैज ऑलरेडी गॉट अ 16 हियर, दिशा शुड नॉट हैव गॉट एंड दिस 8 हियर. आई एम मार्किंग इट इन रेड बिकॉज इफ दिस इज नॉट द केस, रेड वाले को इग्नोर कर लेंगे नाइस. ठीक है, सो दिशा वुड नॉट हैव गॉट एन 8 हियर. फाइन, बिकॉज सिक्स O1 हैज ऑलरेडी बीन एलोकेटेड. भरत को तो ऑलरेडी नहीं मिला होगा, अमर को भी O1 नहीं मिला. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नाउ वी नो फॉर श्योर दैट अमर का स्कोर शुड हैव बीन ईदर 12 और 10 और व्हाटएवर. ठीक है, तो अमर के केस में 4 वैसे भी पॉसिबल नहीं है इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज 4 के साथ में ईदर इट हैज टू बी एन 8 और अ 6, बट 8 6 है ही नहीं. तो अमर बेचारे को तो O1 मिल ही नहीं सकता व्हाटएवर यू डू. ठीक है, सो अमर के पास O1 है ही, दैट मच वी नो फॉर श्योर. भरत के पास O1 नहीं है, चार्ल्स के पास O1 नहीं है, तो O1 कैन बी विथ ईदर दिशा और एलिस. दैट इज अनदर इनसाइड दैट यू विल, either Disha or Elise has O1. Fine. In this case, let's say Elise has got O1. तो Elise को O1 मिला तो बाकी किसी को O1 नहीं मिल सकता, भरत को भी O1 नहीं मिल सकता. Now what can we say in this particular case? आगे भी क्या करेंगे, चलो यहाँ पे Elise को तो अपन ने 6 दे दिया. Now what will happen? Think about it. The second set is very easy. That's why I'm spending more time on this one, because this is a slightly tough nut to crack. So although it might seem like a drag, मतलब हाँ, this is basically one of the best sets to have appeared in CAC. So अब ये 6 इसको दे, now what will happen? So you have 6 objects and 3 people, 7 and 9 are not possible. So we only have O1, O2, O3, O4, O5, O6. And इसमें से O1 चला गया है, अभी 2, 3, 4, 5, 6 ही बचा मेरे पास. So now what will we do? And we know that Charles has to get one of these two. Charles has to get either this one or this one. That much we know for sure. 0203 has to go to either Charles, O2, O3 has to go to either Charles और दिशा. करेक्ट. सो O2, O3 जो है वो या तो चार्ल्स या दिशा के पास जाना चाहिए. दोनों 8 8 8 8 इसको वैल्यू कर रहे हैं. सो वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट दिस. O2, O3 जो है करेक्ट, बिकॉज O2 एंड O3 कैन नॉट गो टू अमर टुगेदर अगर देखा जाए तो, एंड बिकॉज दीज टू पीपल आर एलिजिबल. यहाँ पे जो अंडरलाइन किया था ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर. सो दिशा हैज टू गेट वन आउट ऑफ दीज थ्री एंड वन आउट ऑफ दीज थ्री. चार्ल्स हैज टू गेट ईदर दिस और दिस. सो दैट इज द पॉइंट. सो यहाँ पे ये दो 8 में से एक 8 दिशा के पास ही आना चाहिए, ये दो 8 में से एक 8 चार्ल्स के पास ही आना चाहिए. दैट बेसिकली मीन्स दैट अमर कैन नॉट गेट O2 और O3. सो अमर विल गेट इधर O4, O5 और O6.
2 out of O4, O5 or O6. Now what will happen? O4, O5, O6 होना चाहिए. So can we say that अमर का बंडल का वैल्यू कितना होगा करके in this case? अमर के बंडल का वैल्यू विल बी 10. ठीक है. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, अमर का वैल्यू, बंडल का वैल्यू अगर 10 है, सो सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल्स लेस देन 16, अमर का बंडल का वैल्यू 10 है व्हिच इज लेस देन 16, विल envy some other people who value their own bundle at 16. So Amar should be envious of Elise ना, because Elise ने अपने बंडल को 16 का वैल्यू दिया हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू अमर, एलिस के बंडल का वैल्यू इज 4 प्लस 5 9. तो अमर एलिस को एनवी नहीं कर रहा है, जबकि अमर को एलिस को एनवी करना चाहिए. दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई द अजम्पशन दैट एलिस हैज अ 6 वाज रॉन्ग, एंड इसके लिए एलिस वुड नॉट हैव अ 6. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी राइट. एलिस को O1 नहीं मिल सकता. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है. एलिस कैन नॉट गेट O1. Elise will have to get, yeah, Elise will have to get O5. Fine. So Elise will have to get an O5. ये पक्का है. So Elise has got an O5 and an O10. Fine. तो ये हो गया. Now what else can we say? अब यहाँ पे again we know that this is not possible. तो someone here must have got O1, O2, O3. यहाँ पे कुछ तो हो गया होगा. अभी तक हम लोगों ने O1, O2, O3 डिसाइड नहीं किया है. Right? So Amar, Charles and Disha में से someone would have got O1, O2 and O3. That much we know for sure. And O5 and O6 are the only two things that are left. ठीक है. So this is what we know here. Elise का भी अपन ने figure out कर लिया. Now what else can we say? What can we say about Amar, Charles और Disha now? Last part of the set. ये अगर क्रैक हो गया, your set will be done. Correct, Anmol. So Anmol is saying that if O2 goes to Charles, ठीक है, अगर O2 Charles के पास चला जाएगा, then what will happen? Charles already has 8 plus 8 16, तो ठीक है. बट भरत के केस में भरत विल वैल्यू चार्ल्स एट 9 प्लस 8 17. सो यहाँ पे अगर O2 और O8 चार्ल्स को दे देते हैं, देन भरत माइट एनवी चार्ल्स. सो चार्ल्स कैन नॉट गेट दिस. चार्ल्स विल हैव टू गेट O3. ठीक है. सो O3 गोज टू चार्ल्स. दैट इज. ठीक है. नाउ O3 गोज टू चार्ल्स. सो O3 किसी और के पास नहीं जा सकता. विल जस्ट क्रॉस O3 आउट फ्रॉम एवरीवन एल्स. फाइन. Similarly, we'll cross out O5 from everyone else. We are done. मतलब mostly we are done. We are done with Charles as well. So O3 चला जाएगा Charles के पास. Now we are left with only Amar and Disha. अब दिशा को odd number चाहिए. That much we know for sure. 5 और 3 में से कुछ तो एक नंबर होना चाहिए and 8 होना चाहिए. So Disha is either 8 plus 5 or 8 plus 3. वो होना चाहिए. And Amar के केस में we again know that Amar has to get something out of O1, O2, O4 and O6. ये चार में से कुछ तो दो अमर को मिलना चाहिए. We also figured out that Amar needs to get an even number, and ये सारे के सारे odd है, तो अमर को O1 तो मिलेगा नहीं. That much we figured out. So Amar is not getting O1, Bharat is not getting O1, Charles is not getting O1, Elise is not getting O1, Disha has to get O1. Fine. So Disha has to get O1. Disha cannot get O2. Again, by Sudoku logic, Elise cannot get O2. Bharat cannot get O2. Amar has to get O2. So O1, O2, O3, O5, O7, O8, O9, O10 ये सब हो गया. O4 बचा, O6 बचा अपने पास. ठीक है. That's what is left here. We know that Amar will have to get 9 plus 3 in either case. तो अमर को 12 ही मिलना चाहिए. अमर को 10 या 8 नहीं मिल सकता. So Amar should have got a 12. We can answer one more question. अमर का 12 वाला क्वेश्चन भी अपन आंसर कर सकते हैं. अमर को 12 मिला. ठीक है. That's what we are done with. Now what else do we have left? भरत का we already figured out, Charles we already figured out, Elise we already figured out, Disha का 1/2 we have figured out. अब दिशा कैन इधर भी O1 plus O4 और दिशा कैन हैव इधर O1 plus O6. ये दोनों में से कुछ तो एक दिशा के पास होगा. ठीक है. विच वन विल बी ट्रू फॉर दिशा?
and which one will be true for Amar. ठीक है, so that's what we need to find out here. So how do we find out if Disha has got O4 or O6 in this particular context? किसको क्या मिला होगा, that we can just manage and figure it. ठीक है, so now we have to understand that Amar and Disha who are present, right? अगर दिशा के पास जो भी, if Disha has O1 and O4 let's say, ठीक है, अगर दिशा के पास O1 and O4 है, राइट, सो अमर विल हैव O2 and O5. Fine, so Amar will have O2 and O5 here in that case. So Disha will have valued her bundle at 13 and Disha would have valued Amar's bundle at 13 again. O1 and O5, 8 plus by 13 ही होगा, which is still fine. Higher तो नहीं है, तो it is fine. What about Charles का bundle? According to Disha, Charles का bundle is 8 plus 4 12. ठीक है, तो अगर दिशा को 8 plus 5 13 देते हैं, दिशा विल नॉट बी एनवियस ऑफ चार्ल्स. ठीक है, सो दिशा शुड नॉट, दिशा अगर दिशा को 13 मिलता है, दिशा विल नॉट बी एनविएबल ऑफ एनवियस ऑफ चार्ल्स. दैट्स व्हाई दिशा शुड गेट O6. फाइन, इज दिस राइट और समथिंग इज ऑफ? if Disha is getting 8 plus 5, let's say, we are saying that Charles के केस में Disha would have valued Charles का bundle at 12, तो Disha cannot have 13. Fine, but यहाँ पे you will have to understand one small thing, that some people who value envy some other people. Not all people who value their bundle at 16 will envy all other people. उससे अपने को ये पता चला that 16 वाले will not envy anyone else. ठीक है, so that was basically the problem. So this need not be true is what I'm trying to say. ठीक है, ये नहीं. So what else can we do here and how can we finish this particular set? That is the important part. How do we figure out whether Amar is going to get O2 and O4 or O2 and O6? अब दोनों जाके उसको 12 12 ही मिल रहा है. ठीक है, now think about it. If Amar has valued his bundle at 9 plus 3 12, Disha ka bundle according to him is 4 plus 3 7, which is fine. दिशा के केस में 8 plus 3 11, 8 plus 5 दिशा का बंडल है, तो अमर का बंडल बन जाता है 8 plus 3 11, which is fine. बट दिशा ने अगर अपने बंडल को 8 plus 3 11 करके वैल्यू कर दिया, then what will happen to Amar's bundle? If Disha says that her bundle is 8 plus 3 11, then Amar ka bundle becomes 8 plus 5 13. So now Disha will be envious of Amar, which should not be the case. That's why Disha should get O4, so that वो उसको envy वाला part ना. So 8 plus 5 will be Disha, and that's why Disha will be O1 and O4. O1 and O4, and the last part is going to be Amar, which is O2 and O6. That's it. Now we have got everything. Now we can answer the remaining questions as well. तो ऑलरेडी अपन ने 4 क्वेश्चन तो कर लिए हैं. अमर का वैल्यू फॉर इज ओन बंडल, वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी 12 बिकॉज वी ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि अमर का वैल्यू 12 होगा. ठीक है, तो दैट पार्ट इज डन. देन O4 was given to दिशा is something that we have confirmed also now. तो यहाँ पे हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि भाई दिशा को O4 मिल चुका है. So that is also. O5 was given to, now we'll be able to answer it very quickly. O5 was given to Elise. So जो अपना गेस था वो राइट था. O6 O5 जो था वो Elise को मिलना चाहिए था. So option B will be the answer. And what best can be said about the distribution of object O1? O1 किसको मिला होगा? O1 मिला था दिशा को. So we can say with certainty that O1 was given to Disha. And that basically ends this. ठीक है? So a difficult set. This is a nice difficult set from CAT. But then again, if you knew what needed to be done, you should have been. So let's look at the next one now. This is a much easier one. तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से. The different bars in the diagram above provide information about different orders in various categories. तो यहाँ पे categories दिए हुए हैं. Art, binders, paper, phones, appliances, bookcases, सब order अपने को वो दिया हुआ है, categories दिए हुए हैं. That were booked in the first 2 weeks of September. So first to 14th ideally होना चाहिए. First 2 weeks of September वो अपने को दिया हुआ है कुछ तो यहाँ.
The color and pattern of a bar denotes the ship mode, first class, second class, standard class. तो shipment क्या था? And the left point of a bar indicates the booking day of the order. Booking day क्या था? वो left part of the border है. And the right end point indicates the dispatch day of the order. So left end is booking day, right end is dispatch. So I'll just write it here. So left end होगा booking and the right end will be dispatch. ठीक है, ये होगा. द डिफरेंस बिटवीन द डिस्पैच डे एंड द बुकिंग डे इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द ऑर्डर. तो जो लेंथ ऑफ द बार होगा वो प्रोसेसिंग टाइम. For the same category, an order is considered for booking only after the previous order of the same category is dispatched. ठीक है, तो an order is considered for booking only after the previous order of the same category is dispatched. तो एक ऑर्डर चला जाएगा उसके बाद ही उसको करेंगे. Previous order of the same category would be dispatched. That much we know. So in other words, अगर 8 के केस में देखा जाए तो यहाँ पे सितंबर 1 को कुछ तो बुक किया था और वो डिस्पैच हो गया सितंबर 3 को. ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड क्लास. Then the second order was booked on September 3 and dispatched on September 4. Third order was booked on September 5, dispatched on September 7, I believe, September 6. ठीक है, and so on. तो ये बेसिकली ऐसे चलता है. तो I'll just write it here. September 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. सब करने का जरूरत नहीं, I'm just writing it out. ठीक है, ये कुछ ऐसे. No two consecutive orders of the same category had identical ship mode. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिकल शिप मोड नहीं है. सो वी नो दैट ये जो ग्रीन बार है ना उसमें एक ही ऑर्डर हुआ था. नहीं तो समवन माइट से दो ऑर्डर भी तो हो सकते हैं. ग्रीन में पहले एक चला गया फिर एक चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. ग्रीन कैन नॉट बी फॉलोड बाय ग्रीन, विच मीन्स दैट ये एक ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर. सो 5 ऑर्डर्स ऑफ आर. दैट इज व्हाट इट मीन्स. For example, there were only 2 orders in the furnishing category during this period. So furnishing category जो था यहाँ पे दो ही ऑर्डर थे. एक सेकेंड क्लास में डिलीवर किया था, एक स्टैंडर्ड क्लास में डिलीवर किया गया था. राइट, सो इट वाज बुक्ड ऑन सितंबर 1, डिस्पैच्ड ऑन सितंबर 5. सेकेंड ऑर्डर वाज शिप्ड इन द स्टैंडर्ड क्लास. इट वाज बुक्ड ऑन सितंबर 5, डिस्पैच्ड ऑन सितंबर 12. ठीक है, सो प्रोसेसिंग टाइम्स जो थे वो 1 और 5 के बीच का गैप, सो 4 एंड 5 और 12 के बीच का गैप 7, वो था. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज ऑफ. अभी यहाँ पे बिकॉज वी हैव डेटा गिवन टू अस, हम लोग सब बैठ के पूरा थोड़ा टेबल बनाते बैठेंगे. सो वी विल लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन वी विल ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट. ठीक है, सो ऑन हाउ मेनी डेज बिटवीन सितंबर 1 एंड 14 हैड नो बुकिंग फ्रॉम दिस क्लाइंट कंसिडरिंग ऑल द अबव कैटेगरीज. तो बुकिंग नहीं था. बुकिंग डेट इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ अ बार. तो अब सितंबर 1 को स्टार्ट ऑफ अ बार है, सितंबर 2 को स्टार्ट ऑफ अ बार है, एक भी दिखा तो वी विल नॉट डिस्कार्ड इट. सितंबर 3 को वी हैव अ बार स्टार्टिंग. September 4 को do we have a bar starting? Yes, we have something starting here September 4 को. September 5 को do we have a bar starting? Yes, we do have a bar starting here September 5. September 6 को do we have something starting? So let's see. September 6 ये वाला लाइन ना पूरा का पूरा. तो यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, 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 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. सो September 6 को भी स्टार्ट हो रहा है. September 7 को कुछ स्टार्ट हो रहा है. September 7 को स्टार्ट हो रहा है. यस. September 8 को do we have something starting? So here you will see that we have nothing starting on September 8. ठीक है, सो सितंबर 8 वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन ना, यहाँ पे इट इज इन बिटवीन, इन ट्रांजिट बोल सकते हैं. ये इन बिटवीन है, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंडेड, प्रोसेसिंग, 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 सब प्रोसेसिंग में है. राइट, सो सितंबर 8 इज वन डेट जहां पे कुछ भी बुकिंग नहीं हुआ है. 9th if you look at it, 9th को भी if you look at it, no booking has happened, so 9th को भी कुछ नहीं हुआ है. What about 10th? 10th को if you look at it, again कोई booking नहीं हुआ है, so it's fine. 11th if you look at it, 11th को भी you will see no booking has happened, so no need to worry. 12th को क्या चल रहा है? 12th को if you look at it, कोई booking नहीं हुआ है, it has ended but booking तो नहीं हुआ है. 13th if you look at it, 13 को ये वाला booking हुआ है. 8 has been booked on 13. 14th अगर देखा जाए तो nothing has happened. ठीक है, so the question was inclusive September 1 and September 14, how many days had no booking from the client? So no booking का मतलब कहीं पे भी बार स्टार्ट नहीं हुआ है. So how many days were there जहाँ पे बार स्टार्ट नहीं हुआ है? 8, 9, 10, 11, 12, 14. So the correct answer to this question should be 6 days जहाँ पे कोई भी बुकिंग नहीं हुआ. Fine. So that's basically how it looks like. So just check it once. Just see if everything is fine. In case I have missed something, एक बार देख लेना. I think it's fine. 8, 9, 10, 11, 12, 14. I think that should be the answer.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay. What was the average processing time of all orders in the categories which had only one type of ship? ठीक है, हर कैटेगरी के अंदर जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ शिप मोड। तो कौन से कैटेगरी में ओनली वन टाइप ऑफ शिप मोड था? वन टाइप ऑफ शिप मोड मतलब एक ही कलर ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। यू कैन ओनली सी टू कैटेगरीज जहाँ पे एक ही कलर है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट हाउ मच टाइम डिड इट टेक, व्हाट वाज द थिंग प्रोसेसिंग टाइम, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इट वाज डिस्पैच्ड ऑन सितंबर 1 एंड इट रीच्ड ऑन सितंबर 19, मतलब यहाँ पे 18 डेज हो गया। एंड यहाँ पे इट वाज डिस्पैच्ड ऑन 3 एंड इट वाज जो भी प्रोसेस्ड ऑन 7, तो प्रोसेसिंग टाइम हो गया 4। सो देयर वर 22 डेज इन टोटल अगर देखा जाए, राइट? So that's basically what it looks like in this particular case. So now that we will know that there are two categories जहाँ पे only one mode of shipping was used and 22 days was the total. So divide by 2 करेंगे तो अपने को average मिल जाएगा 11. So average processing time was 11 days for those categories जिसमें only one type of ship mode. ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। Sequence of categories arts, binders, paper and phones जहाँ पे average processing time of their orders in this period. ठीक है, सो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द ऑर्डर मतलब क्या करेंगे हम लोग? एवरेज प्रोसेसिंग टाइम मतलब वील लुक एट द टोटल टाइम दैट वाज देयर एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर देयर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या चीज था, सॉरी, आर्ट, बाइंडर्स, पेपर एंड फ्रूट्स। सो वी आर लुकिंग एट आर्ट, बाइंडर्स, पेपर एंड फ्रूट्स, ये चार को ही देखना ना अपने को, तो वी लुक एट ओनली दिस। तो ये चार के अंदर अपने को देखना है कि कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा था यहाँ। सो आर्ट में यू विल सी फर्स्ट वाला तो 1 को शुरू हुआ था एंड कंटिन्यूसली चल रहा था। सो 21 हैपेंड हियर। सो बेसिकली आर्ट वेंट ऑन फॉर 20 days एंड 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स वर प्रोसेस्ड। सो आर्ट का एवरेज इज 4। Binders started on 1 and it was going on continuously till 16th and there were 4 orders processed. So 16 by 4 करेंगे तो अगेन अपने को 4 मिलेगा यहाँ पे। What was the question here? The question was basically decreasing order of average processing time of their orders in this period. ठीक है, बाइंडर्स का एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। दिस इज 16th आई बिलीव, या 1 to 16, so 15 divided by 4 इक्वल नहीं आना चाहिए, राइट? 15 by 4 is 3.75, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे, दिस इज 3.7। पेपर के केस में इट इज स्टार्टिंग ऑन 2 एंड इट इज एंडिंग ऑन 12, so 12 minus 2 is a 10, so 10 divided by 3 orders we are going to get 3.33 for paper। एंड फोन्स के केस में सेकंड को चालू हो रहा है एंड द लास्ट ऑर्डर वाज डिलीवर्ड ऑन द 17th, so 15 days for 3 orders, so 5। so the question is sequence of categories in decreasing order of average। decreasing order मतलब पहले phones आएगा, phones, art, binders, paper, phones, art, binders, paper। so option D will be the answer। ठीक है, and I think the last question of the set, approximately what percentage of orders had a processing time of 1 day ड्यूरिंग सितंबर 1 to 22 का। तो अपने को सब ऑर्डर्स गिनने पड़ेंगे कितने हैं, एंड 1 डे तो मतलब एक ही ब्लॉक वाला जो है वो अपने को मिल जाए। सो लेट्स लुक एट ऑल द ऑर्डर्स दैट वी हैव। सो आर्ट के अंदर वी हैव 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स फॉर आर्ट, प्लस 1 2 3 4 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23 प्लस 2 25 प्लस 2 27 प्लस 2 29 प्लस, ओके आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। 3 के बाद यू हैव 2 2 2, वन मोर 2 प्लस 2 31 आई थिंक, देन 1 1 33 and then 2 more 35। so out of 35 how many were single day प्रोसेसिंग वाले, मतलब कितने इसमें सिंगल डे में प्रोसेस हुआ था। ठीक है, सो सिंगल डे में 1 बार वाला ढूंढते हैं, तो यू हैव 1 हियर, 1 more here 2 3, then you have 1 more 4, then you have 5 6 7, that's it 7। so you have 7 out of 35 that were processed in the same day, so 1/5 or 20% should be the answer to this one। ठीक है, तो 20% will be the answer to this one, option E। fine, so what percentage of orders had a processing time of 1 day? 20% of the orders। so that was the last question of this particular set। okay, ठीक है, सुमित विल ट्राई टू डू समथिंग अरिथमेटिक के लिए, बट यू कैन लुक एट द डेली ड्रिल, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, आगे जाके वी माइट डू समथिंग ऑफ अ वर्कशॉप और समथिंग, सो लेट्स
ठीक है चलो एंड सना थैंक यू आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट अनमोल या इट इज अ नाइस अप्रोच आई थिंक इट स्ट्रक मी ड्यूरिंग द टेस्ट सो आई जनरली से कि शॉर्टकट्स टेस्ट के टाइम पे नहीं आते लोगों को बट समटाइम्स यू गेट miraculously you get something right so I got into trouble and somehow I got out of trouble as well so sometimes you just see stuff right so that was what happened that's why the approach I like that approach that's why I just went through the questions halfway through the set otherwise it's fine ठीक है वीरेंद्र थैंक यू फॉर दैट आई होप दैट in the coming few days months more people will experience these sessions but yeah I'm glad that you find them worth it ठीक है Akshay, see 50-16 crack you, honestly speaking, I think is a good score because the marks are, of course, on the tougher side. The only thing is, if it's an easier section, if there's an easier section and you are not able to break through that section because you thought that the previous section was difficult, that is the only thing that you will have to be guarded against. Otherwise, you have to avoid those mistakes. So I had done a recent live mock solving of CrackU last Friday, I believe. And although my score was not great, I'll be very honest, my score कुछ खास था नहीं. It could have been much better, but जो भी whatever happened happened, right? I misread a very critical point in DIR, right? तो point one, point two, point three, point four वो order में नहीं होना चाहिए था जो मैंने assume किया. So that was an that was basically an something that I overlooked from my side. तो वो नहीं होना चाहिए था सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स क्वांट के अंदर इफ देर आर 10 क्वेश्चंस दैट आर ऑन द इजियर साइड यू हैव टू अटेम्प्ट दोस 10 क्वेश्चंस विदाउट गेटिंग स्टक ऑन द रिमेनिंग 12 वो करके ही स्कोर थोड़ा आगे रिस्पेक्टेबल बनेगा बट ओवरऑल यू नीड टू नो हाउ टू डील विद द डिफिकल्ट टेस्ट एज वेल नहीं तो लास्ट टाइम जैसे अगर हो जाएगा तो यू विल अननेसेसरीली पैनिक यू विल फील दैट अरे आई हैड बीन डूइंग 10 12 15 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन बट अभी तो नहीं हो रहा करके दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ यू it's a problem with the test not saying a problem with the test but it is something different in terms of the test nothing has changed in your head so don't worry about it one but if you feel that you are not done justice to a particular section because of some trauma from the previous section you have to get out of it that is basically the takeaway that I will have and be very careful when you are solving questions because वहां पे एक एक mark matter करे so with experience you will know where are the points that you get stuck otherwise 50-60 is not a bad score per se but हाँ मतलब you need to be able to play that game as well fine चलो yeah Virendra glad that you do that we'll have something for CET as well don't worry ठीक है चलो so on that note I think we'll close the session thank you everyone for turning up I'll see you again with the next daily drill tomorrow I think is reading comprehension so make sure that you go through the daily drill test that we have and then turn up for the session for best results so that you have seen it already and you have tried it so that you're not surprised with the kind of questions that we're going to do. Okay? Chalo. So thank you everyone. And on that note, I'll close the session. I'll see you again tomorrow with the next session. Till